नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल। मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि जो हमारा पास्ता है वो चिपके ना। थोड़ा सा आप पानी को सिमर होने दें अच्छे से और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। करीब 2-3 मिनट बाद जैसे ही पानी एकदम गर्म हो जाए, बहुत से लोग बॉईल करने के बाद भी डालते हैं, आप चाहें तो पानी बॉईल होने पे भी डाल सकते उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सभी रेशियोज़ रखे हैं। और इसको भी आप अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लें। जैसे ही आप टमाटर डाल देंगे तो आपका प्याज और शिमला मिर्च की कुकिंग एकदम बंद हो जाएगी। और यहाँ पे फ्लेम को आप लो कर दें। अब यहाँ पे हमें सीजनिंग करनी है, तो सीजनिंग में बहुत ही कम मसाले जाएंगे, जिसमें सबसे